With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin with one more lecture of physics related to the forces and their nature. I welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hope so. You all are safe and sound in this pandemic condition of the whole world and must be following all the SOPs given by the authorities. So, students, in our today's lecture, we will discuss about frictional force. We have learned what is the force, and we have seen force is a push or pull that produces motion and tends to produce motion, stops an object or tries to stop an object. This was the all about the force that we have discussed. And also we have seen nature of the forces, and in nature of the forces we have discussed specifically the contact forces. Frictional force is actually the contact force. Always keep it mind when you are dealing with the word friction, whether it is in physics, chemistry or mathematics. Friction always actually told you about the resistance, opposing force. If you are dealing with the frictional force in physics, that means you are dealing with the opposing force, or you are dealing with the resistance. So first of all, it is normally said it is a contact force that slows down the moving things. आपके पास कोई भी चीज़ जो है वो किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो ये आपके पास उसको अपोज करती है, उसको रोक देती है. फॉर एग्जाम्पल, when you are moving on a bicycle and you are continuously pedaling the bicycle, the speed of bicycle will be increased or enhanced. If you stop pedaling the bicycle, then you will see after covering some distance your cycle will be automatically stop. So ये जो आपकी साइकिल खुद ब खुद रुक जाती है, that is the because of the friction. The friction that is actually present between the tires and the rods of the cycle, and friction that is always that is actually opposing force by the air in front of you. So अब जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन से आपके पास जो अपोजिंग एयर आ रही होती है वो, और टायर्स और आपके दरमियान जो है रोड है उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, जो अपोजिंग फोर्स होती है, उसकी वजह से आपके पास जो है वो रुक जाते हैं. So it is all about the frictional force. Friction force is quite helpful in some cases, and we can also say friction have negative and positive impacts. Later on we will see in this lecture what are the different positive and negative aspects of the friction. So first of all, let's have a look upon some examples that will justify you the frictional force. So first of all, here we have a picture that is showing you the concept of friction. Always remember this: friction is always in the opposite direction to the applied force, or you can say in the opposite direction to the motion. If you are moving in the rightward direction, then friction will be exist in the leftward direction. If the applied force is in the rightward direction, then opposing force or the friction force will be in the leftward direction. So आप जिस direction के अंदर आप move कर रहे होते हैं बेटा, उसके opposite direction के अंदर जो है वो आपके पास friction exist कर रही होती है. One more thing, for the friction it is very much necessary for the two different objects to be in contact. As we can see in this picture, here in this red arrow, both these different boxes are इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे की सरफेस को टच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं. सो दो सरफेसेस जितनी ज्यादा इन कॉन्टैक्ट होती हैं उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, और जितना उनके दरमियान कम कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उतनी कम जो है वो आपके पास उनमें फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है. सो आप जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन उस लिहाज से ज्यादा होगी. हाँ, ये जरूर है कि अगर आपके पास जो है, लेट्स सपोज इन दिस ब्लॉक वी हैव अ क्वाइट स्मूथ सरफेस, जितनी सरफेस ज्यादा स्मूथ होगी फ्रिक्शन उतनी कम होगी, और जितनी ज्यादा रफ सरफेस आपके पास होती है उतनी आपके पास फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है. मीन्स के आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस ट्रैक के ऊपर किसी भी ब्लॉक को मूव करने के लिए, और आपको कदरे कम फोर्स लगानी पड़ेगी ये स्मूथ ट्रैक के ऊपर आपके पास फ्रिक्शन फोर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, उसको ट्रेवल करवाने के लिए. So here we have the different negative effects of the friction.
First of all, it causes the wear and tear in the moving parts of machines, motor, and engines. Normally, it is said the efficiency of an engine is about 27% of petrol engine. जो आपके पास बाइक्स के या कार्स के जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो ऑलमोस्ट 27% होती है. That means if I give you the figures, then according to the figures, if you are using the petrol of 100 rupees, then only you are using the petrol of 27 rupees. Rest of all the petrol is actually wasted. So actually wasted because of the friction that is present in the different parts of the engine, that is present in the drag gear, and lot of factors are there that are relating to the friction. So ये आपके पास objects जो होते हैं उनमें wear and tear cause करती है, उनको ख़राब कर देती है friction की वजह से. मिसाल के तौर पे आपके पास गाड़ियों के जो ब्रेक शूज़ होते हैं, ठीक है, और या फिर आपके पास बाइक्स के जो ब्रेक शूज़ होते हैं वो आपको 3 से 4 माह बाद चेंज करने पड़ते हैं, because there is a lot of friction between the brake shoe and the axle of the bike or any vehicles. So here I have shown a picture of tires that is showing the friction between the tires and roads. So ये अगर friction exist करेगी तो फिर आपके पास brakes काम करेंगी. So ये wear and tear हो जाते हैं, जो आपके जूते जो हैं वो खराब हो जाते हैं, उनमें wear and tear आ जाता है. That is all about due to the friction. So here we have the first negative effect of the friction. After this, we have reduced the efficiency of the engine power of the cars up to the 20%. कि ये friction जो है ये आपके पास cars की जो frequency होती है उसको बहुत ज़्यादा reduce कर देती है, जैसा कि मैं already इस चीज़ को explain कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो इसके सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होते बेटा, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल, वी कांट वॉक ऑन द सरफेस ऑफ ऑन एनी सरफेस इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर. आप किसी भी सरफेस के ऊपर चल नहीं सकते अगर वहां पे फ्रिक्शन ना हो. फॉर एग्जांपल, यू आर मूविंग ऑन ए रोड एंड इट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू मूव ऑन ए स्पेसिफिक रोड. बट नाउ कंसीडर यू आर मूविंग ऑन ए स्नो. अगर आप बर्फ के ऊपर चल रहे हैं, सो फ्रिक्शन इज क्वाइट रिड्यूस्ड ओवर देयर एंड यू विल स्लिप मैनी टाइम्स. आप काफी दफा स्लिप हो जाते हैं उसके ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन जितनी ज्यादा आपके पास होगी उतना ज्यादा आपके लिए चलना आसान हो जाएगा. Used in brake pads to slow down the motion of the vehicles. So friction is necessary to reduce the speed. अगर आपके पास जो है वो ब्रेक पैड्स और जो एक्सेल है, जो व्हील है, उनके दरमियान फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आपके पास जो है वो उनकी स्पीड स्लो नहीं हो सकती और फास्ट मूविंग की वजह से आपके पास जो है वो काफ़ी तरह के एक्सीडेंट पॉसिबल होते हैं. Later on, we can write on the paper or pen, and here I have shown the chalk and blackboard. On anything you can write with the help of friction. अगर वहाँ पे friction exist नहीं करती तो उसके ऊपर आप properly लिख नहीं सकते. आप जैसा कि देखते हैं जब आप किसी भी कॉपी पे लिख रहे होते हैं तो आप दबा के लिखते हैं. You put a specific force on the paper and on the paper with the help of pen, and you try to write in a very beautiful styles. So all it happens just because of friction. Here we have just three different positive effects of the friction. First one is we can walk without slipping. Second one is brake pads that slows down the speed of the vehicle. And later on we have the chalk sticks, or you can say you can write on a specific paper just because of the friction. सो जहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन यूजफुल है वहाँ पे तो बड़ी अच्छी बात है. जहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वी यूज डिफरेंट मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. सो लेट्स हैव अ लुक अपॉन दोज मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्शन. So here we have the reduce methods to reduce friction. First of all, we need to the polished surface. Polished surface means that I have shown you in the first slide of today's lecture, in which there were the two different surfaces. दो blocks आपके पास पड़े थे. एक block की surface smooth थी, जबकि दूसरी diagram के अंदर आपने देखा था कि आपके पास rough surface थी. तो जितनी ज़्यादा smooth surface होगी उतनी friction आपके पास जो है वो कम होना शुरू हो जाती है. Second one is the lubrication. Lubrication is very much necessary to reduce the friction. आप जितनी भी चीज़ों को ऑयली बनाते हैं उतना उनकी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उतना बेहतर तरीके से उनकी एफिशिएंसी जो है वो उनकी एक्टिविटी बेहतर हो जाती है. एंड द लास्ट वन इज द बॉल बेरिंग्स. बॉल बेरिंग्स आर स्पेसिफिकली यूज इन द एक्सेल that helps to move the wheel of a vehicle, wheel of a cycle, wheel or you can say wheel of the different moving parts of engine or different types of machines that are mechanically used. So these ball bearings are used mechanically in different engines and in different machines. That also reduces the friction.
सो हेयर वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिश, एग्जांपल ऑफ द पॉलिश सरफेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सरफेस पे फ्रिक्शन मिनिमम है, यहाँ पे आपके पास जो है फ्रिक्शन जो है वो आपके पास मैक्सिमम होगी। वन मोर थिंग दैट इज नेसेसरी, द पॉलिश सरफेस विल बी फॉर द बोथ फॉर द बोथ ऑब्जेक्ट्स। जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा रहे हैं उसकी सरफेस भी पॉलिश होनी चाहिए, और जिस सरफेस में मूव करवा रहे हैं वो सरफेस भी जो है वो आपके पास पॉलिश सरफेस होगी, तो फिर फ्रिक्शन जो है वो काफी हद तक रिड्यूस की जा सकती है। लेटर ऑन जो है वो आपके पास लुब्रिकेशन होती है कि आपके पास जितनी ज़्यादा लुब्रिकेशन होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास फ्रिक्शन रिड्यूस होगी, उतने वियर एंड टीयर्स जो है वो पार्ट्स के अंदर आपके पास कम से कम देखने में मिलता है। एंड द लास्ट वन इज द यूजेज ऑफ बॉल बेरिंग। सो ये बॉल बेरिंग के आपके पास एग्जांपल है जो कि मोशन को स्मूथ करते हैं। सो जितनी भी आपके पास व्हीकल्स होती हैं जो स्पीडी व्हीकल्स होती हैं, कार्स लाइक, और यू कैन से द ट्रेन्स, उन सब के अंदर जो है इस तरह के बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपके पास फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। Clear? Hope so. This contact force, friction force is clear to you. If you have any kind of question, query, or confusion, you can contact me. You can ask me anytime. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.